Hello students, I am going to continue with the chapter Ratio and Proportion of 9th standard, practice set 4.1 and the question number 5. So we already solved first two examples of question number 5, that is convert the following ratios into percentage. So see the third example, the example is 7/10. Now we have to convert this ratio into percentage. So what is the meaning of percentage? That is, if the second term or the denominator is 100, then it is called as a percentage. So we assume that the ratio is equals to x%. So 7/10 is equals to x upon 100. So we're going to find out the value of x. So taking cross, we'll get 7/10 into 100. So the answer is 70%. So the what is the meaning? मतलब जो ratio है that is 7/10 is nothing but the 70%. So मैंने यहाँ पे x% assume किया है और उसको percentage में convert किया है. Now see the fourth example, that is 546/600. So we are given this ratio and we have to convert it into percentage. So we assume that it is equals to x%. So 546/600 is equals to 6/100. Now move this 100 to this side, so we'll get 546/600 into 100. So these two zeros will get cancelled, and so the answer is x is equals to 91%. Now see the example number 5, that is 7/16. Now convert this ratio into the percentage. So 7/16 is equals to x%. So x% मतलब x upon 100. Now move this 100 to this side, so we'll get x is equals to 7 into 100/16 or 7/16 into 100. Just try to move this 100 to this side. Now we're taking the product, that is 700/16, and after dividing we get the answer, that is 43.75%. So this is the question number 5, in which we learn that how to convert the ratio into the percentage. Now there are some word problems. So question number 6, the ratio of ages of Abha and her mother is 2:5. मतलब हमें यहाँ पे दिया है कि आभा एंड उसकी जो मदर है उसका जो एज है, उसके जो एजेस है, उनका जो रेशो है वो है 2:5. मतलब जो ये 2 है वो आभा के लिए है और उसकी मदर के लिए है 5. सो एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ her mother age was 27 years. So find the present age of Abha and her mother. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रेशो है वो हमने अभी डिवाइड किया था, दैट इज़ आभा के लिए हमने ये 2 कंसिडर किया था और उसके मदर के लिए 5. सो इन दोनों नंबर के लिए हम एक कॉमन मल्टीपल कंसिडर करते हैं. सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल, दैट इज़ वी स्टार्ट विद दैट द कॉमन मल्टीपल इज़ x. कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर को हम ये x से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सी द प्रेजेंट एज ऑफ आभा. अभी हम बोल रहे थे कि ये 2 है, लेकिन ये कॉमन मल्टीपल उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x. सो द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज़ 2x हियर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभाज मदर, जिसके लिए हमने 5 नंबर लिया था, उसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज़ 5x ईयर्स. नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, सो व्हाट कंडीशन वी आर गिवन, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ. मतलब हमें ये जो 2x है वो 5 में से सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ मतलब उस टाइम के लिए हमें मदर का जो एज है वो 27 दिया है. सो मदर के एज में से हम आभा का जो एज हमने कंसिडर किया है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे. एट दैट टाइम हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर. सो 5x minus 2x is equals to 27. So 3x is equals to 27, and so we get x is equals to 9. मतलब now we are going to put down this value of x is equals to 9. जो हमने कंसिडर किया था यहाँ पे, ये जो 2 नंबर्स है वही हम फिर से रिपीट करेंगे आंसर में, क्योंकि हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर. तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा हमने क्या कंसिडर किया था, 2x. सो प्रेजेंट एज ऑफ 2x, वही 2 लाइन्स में रिपीट कर रही हूँ, 2x, बट यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट डाउन करेंगे. So what is the value of x? It is 9. So 2 into 9, that is equals to 18 years. And the present age of Abha's mother, so here we consider it as a 5x. So 5 into x. So the value of x is 9. So 5 into 9, that is 45 years. So here we find the age of Abha and her mother.
Now see the question number 7. So in question number 9 there is again a word problem. So present age of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4? So present age of Vatsala we consider it as a 14, जो हमें दिया है that is 14 years, and सारा का दिया है हमें 10 years. So after how many years? So we don't know the years, so we consider it as a x. So after x years, x ईयर के बाद उनका जो एज होगा वो वत्सला का प्रेजेंट एज है 14. सो आफ्टर x years it becomes 14 plus x years, and the Sara's age is 10 plus x years. So according to the given condition, so what we have to find out, that is after how many years the ratio of their ages will become 5:4. So according to given condition, that is this ratio, that is 14 plus x upon 10 plus x, we are given that is 5/4. Now taking cross, what we get? So 4 into 14 plus x is equals to 5 into 10 plus x. Now multiply the bracket by this number. So we'll get 14 4s are 56 plus 4x plus is equals to 50 plus 5x. So 5x minus 4x, we taking it. So 5 minus x, so we get here 56 minus 50, so we get here x is equals to 6. So after 6 years the ratio of their ages will be 5:4. Now the next example, that is 8th example, the ratio of present ages of Rihanna and her mother is 2:7. So it is same that of this question number 6. After 2 years the ratio of their ages will be 1:3. So what is the Rihanna's present age? So here we consider that is the common multiple of is x. So the present age of Rihanna will be 2x and her mother will be 7x. So here we have given that is after 2 years, मतलब हमें यहाँ पे दोनों में से हमें 2 ऐड करना है. So after 2 years Rihanna's age will be 2x plus 2 years. So age of Rihanna's mother will be 7x plus 2 years, because we going to add this 2, because we are given that is after 2 years, so we have to add 2 in both the ages, that is in Rihanna's age and in Rihanna's mother's age. So according to given condition, 2x plus 2 upon 7x plus 2 is equals to 1/3. यहाँ पे हमें एज का रेशियो दिया है, दैट इज 1:3, दैट इज 1/3. नाउ टेकिंग क्रॉस, सो 3 into 2x plus 2 इज इक्वल्स टू 1 into 7x plus 2. सो यहाँ पे हमें मिला 6x plus 6 इज इक्वल्स टू 7x plus 2. सो वी मूविंग दिस 6 टू दिस साइड्स, सो 7x minus 6x एंड यहाँ पे 6 minus 2. सो यहाँ पे हमें मिला x इज इक्वल्स टू 4. सो ये जो x इज इक्वल्स टू 4 है, वी गोइंग टू पुट डाउन इन रिहाना's प्रेजेंट एज. जो हमने कंसिडर किया था, दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना इज 2x. सो रिहाना's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 2x. द वैल्यू ऑफ x इज 4, सो टोटली वी गेट हियर 8 years. So this is all about the exercise 4. That is practice set 4.1. The remaining concept we will see in the next lecture. Thank you.